Hello students, good morning to you all. Today we are going to discuss about biogeochemical cycle of class 9, chapter natural resources. First of all, what do we mean by biogeochemical cycle? Bio means living organisms. Geo means earth. And chemicals here means the movement of chemicals between the living organisms and non-living things. What are these non-living things? They are sun, they are air, water and soil. So the movement of chemicals between abiotic, that is geological things, and biotic substances. What they are known as? This process is called biogeochemical cycle. We can also give another name, that is nutrient cycle. हम इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी साइक्लिंग प्रोसेस के द्वारा हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है. Around 30 to 40 chemicals are needed for maintaining the protoplasm. हमारे सेल्स के मेंटेनेंस के लिए कम से कम 30 से 40 केमिकल्स की जरूरत होती है. एंड दोज केमिकल्स आर नोन एज बायोजेनिक एलिमेंट्स. हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं. इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर सम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर दे? दे आर कार्बन, दे आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, oxygen, phosphorus and sulfur. So to remember their name, it's better to remember a word. एक शब्द को याद रख लेने से, एक वर्ड को याद रख लेने से आपको सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स याद हो जाएंगे. And what is this word? Look at here, SNOPs. What is this word? This word is SNOPs, in which C stands for carbon, H for hydrogen, N for nitrogen, O for oxygen, P for phosphorus and S for sulfur. Why do we need this? Why do we need these chemicals? To maintain the body structure, or we can say that these elements are very important or required for the maintenance of proper growth, development, reproduction and different types of metabolic purposes. And these elements we get in two forms. Two sources are there. To get these all chemicals, we have two sources. They are found in two forms. What are those? They are gaseous form and sedimentary. Gaseous and sedimentary. For example, in gaseous we can say that carbon and oxygen we get from atmosphere. Carbon dioxide is the main source of carbon, and oxygen we know, which is released by the plants at the time of photosynthesis. Then sedimentary means which are found in soil or we get from soil, like carbon, oxygen and nitrogen also. Nitrogen means, in gaseous form nitrogen is also there. It is found in the atmosphere in abundant. 78% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन फिर भी प्लांट्स इन्हें डायरेक्ट नहीं ले सकते. इसके लिए इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एलिमेंट एंड मिक्स फिक्स्ड विद द सॉइल. इसे कन्वर्ट किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड विद अनदर प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, एंड देन इट इज फिक्स्ड इन द सॉइल. ये सॉइल में फिक्स होता है, वाटर के साथ डिसॉल्व होता है और तब प्लांट्स के रूट के द्वारा लिया जाता है. और इस तरह से फिर ये बायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक में साइक्लिंग करते हुए वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है. सो सेडिमेंट्री, व्हाट आर दीज सेडिमेंट्री? वी कैन से सल्फर एंड फॉस्फोरस. दीज आर सेडिमेंट्रीज. वी गेट दीज आइटम्स फ्रॉम आइदर रॉक और इन सॉल्ट फॉर्म. So these all elements are nutrients for us for maintaining our protoplasm, proper growth, development, reproduction and metabolic activities. How do we get this? हमें ये मिलते कहाँ से हैं?
इन्हें हम अपने से लोअर ट्रॉफिकल लेवल से ऑब्टेन करते हैं। अपने से लोअर ट्रॉफिकल लेवल मीन्स आइदर प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स से हम इन्हें लेते हैं। प्लांट्स इसे कहां से लेते हैं? प्लांट्स आइदर दे टेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रॉम द सॉइल. What is that? Nitrogen, sulfur and phosphorus with their roots, and then it goes to the different organisms. When these organisms die, जब plants या animals मरते हैं, then they are decomposed by the decomposers. ये decomposers के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं और ये decomposers इन्हें डिकम्पोज करके इनमें पाए जाने वाले सारे बायोजेनिक एलिमेंट्स को वापस once again fixed in the soil and released in the atmosphere. और इस तरह से ये एक पूल, साइकिल का एक पूल जो है अर्थ पे मेंटेन रहता है. So who is helpful in that? This is they are microorganisms which are very helpful in maintaining this pool on this earth. So now we can define this biogeochemical cycle. What is this biogeochemical cycle? The repeated circulation of biogenic nutrients between abiotic and biotic substances in a cyclic form is known as biogeochemical cycle. Now we can say the characteristics of this biogeochemical cycle. इनके characteristics क्या है? Then we can say, no, the first characteristic is what? That nutrient continuously circulate between abiotic and biotic. Second हम कह सकते हैं ना कि nutrients are not lost. ये जो nutrients हैं ये they never lost. They are recycled. ये lost नहीं होते हैं बल्कि ये recycled हो जाते हैं. And third we can say that the decomposers help in the recycling of and the maintaining of nutrients pool on the earth. So these are the characteristics of this biogeochemical cycle. I hope you people have understood this biogeochemical cycle. Then in my next video I am going to make you understand about this movement of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen in a cyclic form. How do they come to the soil, how they are taken by the living organisms, and how they are once again released, and this cycle is maintained. Thank you all of you, and please don't forget to press the bell icon, subscribe my channel and write the comments. Thanks once again.